मानसिक तौर से इंसान टूट जाता है। एक इंसान का विकलांगता के साथ जीना कितना मुश्किल होगा। कभी कभी ये भी लगता था कि क्यों बचे ही, खत्म ही हो जाना चाहिए था। फिर वही ना, मौत तो आती नहीं इतनी जल्दी, नहीं कुछ और हिस्ट्री लिखनी थी। तब मैंने हॉस्पिटल के बेड से डिसाइड किया कि लाइफ का सबसे टफ गेम करना है। जिस टफ गेम की बात अरुणिमा जी कर रही हैं, वो किसी के लिए भी खेल पाना आसान नहीं है। पर अरुणिमा तो एक पैर पर आसमान पर चढ़ाई करने वाली थीं। उन्हें जाना था दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह करने। अरुणिमा ने ठान लिया था अपने डर को जीतने का और अपनी कमजोरी को हराने का। पर जब अरुणिमा के इस लक्ष्य के बारे में लोगों को पता चला तो लोग उन्हें पागल समझने लगे। 8,848 मीटर की ऊंचाई तय करना कोई आम बात थोड़ी है। मनोरोग चिकित्सक को भी बुलाया गया, पर कुछ अपने थे जिन्हें अरुणिमा पर पूरा भरोसा था। सब कोई मुझे पागल बोलता था। ठीक है, मुझे अब जब पागल बोली दी है तो क्यों ना, क्योंकि अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो एक पागल ही इतिहास बनाता है जिसने भी किया है। क्योंकि किसी भी काम करने के लिए पागलपन होना जरूरी होता है। तो मेरा परिवार जो है ना, जिसके पास भाई का इतना ज़बरदस्त सपोर्ट हो, बहन का इतना ज़बरदस्त सपोर्ट और माँ का इतना ज़बरदस्त सपोर्ट, इवन पिता जैसे ब्रदर इन लॉ का भी सपोर्ट हो, तो उसको कोई नहीं रोक पाएगा। तो मेरी इस जर्नी का अगर बात करें, जैसे होता है ना, हीरो पर्दे के आगे होता है और पर्दे के पीछे वाले जो हीरो है वो ये लोग हैं। अरुणिमा में आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं थी, और जब उस आत्मविश्वास में अपनों का विश्वास जुड़ा तो अरुणिमा की हिम्मत और बढ़ गई और फिर शुरू हो गया माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का असाधारण सफर। एवरेस्ट चढ़ने के इरादे को कामयाब करने की राह में अरुणिमा ने अपना पहला कदम उठाया। उन्होंने उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से कोर्स किया। इस सफर में उनकी मार्गदर्शक बनी माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल जी। अरुणिमा ने 2012 में बछेंद्री पाल जी के ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा बनकर शुरू कर दी एवरेस्ट की चढ़ाई। पहली बार मैंने इतने करीब से पहाड़ को देखा था। फिर मैं अपने पैरों को देखती, पहाड़ को देखती कि लगता था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अरुणिमा के रास्ते में मुश्किलें और रुकावटें पहले ही कम नहीं थीं। ऊपर से खराब मौसम ने और भी मुसीबतें बढ़ा दी। एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचते पहुंचते ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगभग खाली हो चुका था। बची थी तो बस अरुणिमा की हिम्मत। आपको शायद विश्वास ना हो, पर एवरेस्ट से वापस आते वक्त अरुणिमा का आर्टिफिशियल पैर पूरी तरह से निकल चुका था और एक पैर पर ही अरुणिमा को वापस नीचे उतरना पड़ा। पर इतनी मुश्किलों के बाद भी अरुणिमा ने आखिर छू ही लिया आसमान। वो जो 6 से 7 मिनट हैं मेरी जिंदगी के, वो सबसे अनमोल पल है। क्योंकि वो पल शायद ही किसी को नसीब होता, बहुत कम लोगों को होता है कि दुनिया की सबसे ऊंची जगह पे आप खड़े होकर और अपने देश का तिरंगा लगा रहे हो। मास्क से नीचे उतार करके मैं चिल्लाना चाह रही थी कि जोर से, मैं कितनी जोर से चिल्लाऊं, इतनी जोर से कि सबको बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। उन लोगों को बता दूं जो लोग ये सोचते, महिला, विकलांग, मिडिल क्लास फैमिली, जो लोग ये सोचते थे ज़िंदगी में एक बार कोई काम किया तो फेल हुए, दोबारा ट्राई नहीं करते थे। तो मैं उनको चिल्ला करके बताना चाहती थी ये बात। मैंने अपना नेशनल फ्लैग वहाँ पर जब निकाल के लगा रही थी मैं, तो कुछ लोग नॉर्थ साइड से आए थे, यानी कि चाइना साइड से। तो मेरे मन में क्या आ रहा था कि मेरा फ्लैग, यानी कि मेरा 3 कलर सबसे ऊपर दिखाई दे। असंभव को संभव कर दिखाया अरुणिमा ने। बता दिया पूरी दुनिया को कि विकलांगता किसी के भी जीवन में कभी बाधा नहीं बन सकती। और अरुणिमा ने 20 मई 2013 को एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर विश्व की सबसे पहली दिव्यांग महिला बनने का इतिहास रचा और हौसले और जज्बे की ऐसी मिसाल कायम कर दी जो हर इंसान को प्रेरित करती रहेगी। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ। मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने। इस अनोखे कीर्तिमान को रचने के लिए उनको सन 2015 में पद्मश्री जैसे इतने बड़े सम्मान से नवाजा गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उनके हिस्से में आई और भी कई बड़ी बड़ी उपलब्धियां।
पूरी पीढ़ी को प्रेरित करने के बाद अब अरुणिमा का ख्वाब था कि वो देश के दूसरे दिव्यांगों को भी सशक्त करें, और उसी का नतीजा है ये स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जिसका नाम है अरुणिमा फाउंडेशन। इस फाउंडेशन को साथ मिला नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। 2011 में इसको रजिस्टर्ड कराया था। इसका मकसद यही है कि ये जो बच्चे हैं, हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं, इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का, और क्योंकि समाज में एक जगह बनाने के लिए, क्योंकि दिव्यांगता को लोग हे दृष्टि से देखते हैं, तो इनको लोग बहुत ज़्यादा जगह नहीं देते हैं, और बस उनको एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का है। इस ट्रेनिंग संस्था में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत चलाए जाते हैं 3 प्रोग्राम: हॉस्पिटैलिटी, रिटेल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप जानते हैं इन क्षेत्रों में यहाँ दिव्यांगों को दिया जाता है बिल्कुल मुफ्त प्रशिक्षण। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। हॉस्टल, खाना पीना, चाय नाश्ता टोटल निःशुल्क, एक किसी भी प्रकार का पैसा नहीं है, टोटल फ्री है। यहाँ बच्चों को आवासीय सेंटर देके उनको मानसिक तौर पर मजबूत बनाना, बौद्धिक विकास देना। हमें इन बच्चों को मजबूर नहीं बनाना है, मजबूत बनाना है। ये हमारे फाउंडेशन का पहला ध्येय है। इरादों में मजबूती होने का महत्व भला अरुणिमा से बेहतर कौन जान सकता है। अरुणिमा फाउंडेशन में 3 अलग अलग क्षेत्रों में ट्रेनिंग ले रहे हैं 180 दिव्यांग। ये केंद्र ऐसा है कि प्रशिक्षण के साथ साथ उनको रोजगार भी हम मुहैया कराते हैं, तो वो एक हमारा जिसको कहते हैं एंड टू एंड सोल्यूशन। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत हमको आईटी की ट्रेनिंग दी जा रही है, और डोमेस्टिक डाटा एंट्री के तहत ये ट्रेनिंग हम लोग ले रहे हैं, और हम लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारी अब तक दी गई है। अब हम लोग कुशल हैं, अब जॉब करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जहाँ भी हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम लोग अपना परफॉर्मेंस पूरा देने के लिए तैयार हैं। अब जब हम जाते हैं अपने गांव, तो लोग सोचते हैं कि ये कुछ बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं। हम जाते हैं तो लोगों का बदलाव और बिहेवियर हम लोगों से बहुत अलग होता है, और इज्जत देते हैं ज़्यादा लोग जो है। कौन कहता है दिव्यांगों को सहारे की जरूरत है? इन्हें तो बस समझने की जरूरत है। कैसे सो जाए वो आंखें जिनमें ख्वाब हैं, गुनगुना कर ही रहे। संजय कुमार सिंह, सचिन द्विवेदी और उमेश कुमार जैसे तमाम युवा ऐसे प्रशिक्षण से बदल रहे हैं समाज का नजरिया, बन रहे हैं अपनों की रोजी रोटी का जरिया, और साथ ही दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। कह दो आसमान से है तैयार हम। विकलांगता नो डाउट जब हम इस तरीके की घटना होती है तो एक अभिशाप के रूप में होती है, नो डाउट एक अभिशाप है, लेकिन हम अपने उसको कर्मों से वरदान के रूप में बदल सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे डिफरेंटली एबल्ड हमारे साथी जो हैं, जिन्होंने कर दिखाया है, अपनी विकलांगता को वरदान के रूप में बदल दिया है, समाज के आगे एक उदाहरण बन गए हैं। हर मुश्किल आसान हो जाती है जब आपके पास है मनोबल। तरक्की का शिखर छू सकते हैं जब आपके पास है कौशल। स्किल इंडिया, कौशल भारत, सोशल भारत। वाह, तो देखा आपने, लखनऊ से जो दिल्ली की मंजिल हो सकती थी वो बन गई माउंट एवरेस्ट की। अरुणिमा की हिम्मत से उसके टूटे हुए पैर दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ को चढ़ने से रोक नहीं पाए। आखिर उसने एवरेस्ट से भी ऊंचा पहाड़ उस रात पार किया जिस रात वो ट्रेन से फेंकी गई थी। अरुणिमा, आपको हमारा सलाम। सीन नंबर 4 में आपનું સ્વાગત છે। અરુણિમાની વાત ફરી એકવાર। કલ્પના કરો કે કોઈ યુવતી ઉપર હુમલો થાય અને એ હુમલાની અંદર પોતાનો ડાબો પગ ગુમાવી દેશે, પછી હોસ્પિટલ, પછી જ્યારે મનમાં નક્કી કરે છે કે એવરેસ્ટ સર કરવું પડે, બસ लगनથી આગળ વધે છે। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो मैंने लांगा है समंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। सीन नंबर 4 ની અંદર અરુણિમાના
જબરદસ્ત પરફોર્મન્સ અને જે એક વિકલાંગ યુવતી એવરેસ્ટ સર કરે છે તેની વાત અદ્ભુત, બીજા માટે પ્રેરણાદાયક અને એક ભારતીય મહિલાની જબરદસ્ત સફળતાની વાત. ચાલો શરૂ. સીન નંબર 4 ની શરૂઆત. I arrived at Everest Base Camp on 11th April 2013. Exactly 2 years had passed since I was thrown out of the moving train. બરોબર 2 વર્ષનો સમયગાળો વીતી ગયો હતો કે હું એપ્રિલ 11, 2013 ના રોજ એવરેસ્ટના બેઝ કેમ્પ પર આવી પહોંચી હતી. આ સમયગાળો પેલા 2 વર્ષ પહેલા ચાલતી ટ્રેનમાંથી મને ફેંકી દેવાઈ હતી. At the camp, nobody seems to know that કેમ્પની અંદર કોઈ પણને ખબર નહોતી that I had an artificial leg, કે મારી પાસે એક કૃત્રિમ પગ છે. One day while returning, એક દિવસ જ્યારે પાછા ફરતી વખતે my left leg got wet with snow. મારો ડાબો પગ હતો એ ભીંજાઈ ગયો હતો બરફના કારણે. Because I had slipped a couple of times on the slippery surface, કેમ કે લપસણી સપાટી પર હું 2 વાર લપસી પડી હતી. Next morning, I left the artificial leg out in the sun to dry. બીજા દિવસે સવારે જ્યારે મેં મારા ડાબા પગને સુકાવા માટે તડકામાં મૂક્યો ત્યારે at that time, તે સમયે some foreigners realized that I had only one leg. ત્યારે કેટલાક વિદેશીઓને લાગ્યું, તેઓએ અનુભવ્યું અથવા તેને જાણ્યું કે મારી પાસે એક પગ છે. After that, my TRP soared. In my final expedition to Sagarmatha, પછી જે મારી ટીઆરપી એટલે જે આપણે કહીએ કે કોઈ પણ લોકપ્રિયતા એ ખૂબ જ વધી ગઈ હતી. સાગરમાથા, my final expedition to સાગરમાથા. સાગરમાથા છે એ એવરેસ્ટનું લોકલ નામ છે. Head of the sea, the local name for the peak of Everest. આ એવરેસ્ટની ચઢાઈનું એક લોકલ નામ છે. નીમા કાંચા વોઝ માય માઉન્ટેન ગાઈડ. નીમા કાંચા નામનો વ્યક્તિ હતો એ મારા માર્ગદર્શક હતા. He was a nice and helpful Nepalese man. તે ખૂબ જ સારો અને મદદ કરતા નેપાળીસ માણસ હતો. જેમ આપણે ઇન્ડિયામાં રહેતા હોય તો ઇન્ડિયન કહીએ ને આફ્રિકામાં રહેતા હોય તો આફ્રિકન કહીએ, નેપાળમાં રહેતા લોકોને નેપાળીસ કહે. Who used to scold me at times. તે મને વારંવાર ધમકાવતો when upset, જ્યારે હું અપસેટ થઈ જતી ત્યારે. કેટલું સુંદર મજાની વાત કરી, ખૂબ જ સરસ મજાની વાત થઈ. આના પછી જે કંઈ શરૂ થશે એ તેના
એવરેસ્ટ શિખરની અંતિમ કે The last trek to the peak of Everest began. એવરેસ્ટ પર ચડવાની છેલ્લી કેડીની શરૂઆત થાય છે. It was a very dangerous, narrow path. તે ખૂબ જ જોખમી સાંકડો રસ્તો હતો. I slipped. હું લસરતી હતી. And fell once. અને ફરી એકવાર પડી ગઈ હતી. Even my oxygen was running out. મારો ઓક્સિજન પણ ખાસ થવા આવ્યો હતો. I was struggling with my paining leg. હું મારા દુખતા પગ સાથે સતત સંઘર્ષ કરી રહી હતી. My Sherpa said. મારા શેરપાએ કીધું, I must quit. મારે આ છોડીને પાછું વળવું જોઈએ. But I knew, પણ હું જાણતી હતી, that there was no going back. કે પાછા ફરવાનો કોઈ રસ્તો જ નથી. કેટલું સુંદર મજાની વાત કરી. એકવાર મનમાં નક્કી કરી લીધું હતું કે એવરેસ્ટ સર કરવું છે. અને મનમાં એમ પણ હતું કે જો હું મારે મરવાનું હોત તો હું ટ્રેનના પાટા વચ્ચે આવીને કચડાઈ ગઈ હોત. પણ હું કંઈક નવું કરવા સર્જાયેલી છું. હું કંઈક અલગ જ વ્યક્તિ છું. ઈશ્વરે મને કંઈક અલગ જ વિક્રમ સ્થાપવા માટે બચાવી છે. I pushed forward through my Sherpa, kept insisting that I should return. મારા શેરપાએ મને કહ્યું, સતત કહી રહ્યો હતો, સતત આગ્રહ રાખી રહ્યો હતો કે મારે પાછું જ ફરવું જોઈએ. છતાં પણ મેં મારી જાતને આગળ તરફ વધારતી જ ગઈ. પુશ્ડ ફોરવર્ડ એટલે આગળ તરફ ધકેલવું. I have enough oxygen to reach the summit and hoist the country's flag. મેં એમ કીધું કે મારી પાસે જરૂરી ઓક્સિજનનો જથ્થો છે સમિટ સુધી પહોંચવા માટેનો. એન્ડ હોઇસ્ટ ધ કન્ટ્રી ફ્લેગ અને મારા દેશના ઝંડાને લહેરાવાનો. વોટ હેપન્સ આફ્ટર વર્ડ્સ ડઝન્ટ મેટર એનીવન. પછી શું થયું એના કોઈ પણ જાતના શબ્દો નથી. આઈ ટોલ્ડ નીમાકાંચા ફેમિલી. મેં નીમાકાંચાને મક્કમતાપૂર્વક કહી દીધું, રિમેમ્બર, યાદ રાખજો, none can defeat you until you concede. You occasional failure will test you but keep trying. જ્યાં સુધી તમે તમારી જાતથી હાર ન માનો ત્યાં સુધી તમને કોઈ પણ વ્યક્તિ હરાવી શકતું નથી. હા, પ્રસંગોપાત નિષ્ફળતાઓ એ તમને સતત પ્રયત્ન કરવાની પ્રેરણા આપે છે. Some doors of opportunity will certainly open. કેટલાક તકના દરવાજો હંમેશા ખુલે છે. Then I could see him following me, even as I continued to drag myself to the top. પછી મેં જોયું કે તે સતત મને અનુસરતો હતો અને મેં મારી જાતને ટોપ સુધી લઈ જવા માટે સતત ખેંચવાનું શરૂ કર્યું. The drag, walk, drag, ધસડાવું, ચાલવું, ધસડાવું, continue till it finally happened. જ્યાં સુધી અંતે મેં આ બનાવ્યું નહીં, જ્યાં સુધી મારું લક્ષ્ય સિદ્ધ ન કર્યું ત્યાં સુધી મારી જાતને હું ડ્રેગ વોક ડ્રેગ એટલે ઘસડતી ચાલતી રહી. The top is a small 20 by 20 ice table. જે સમિટ છે, જે ટોચ છે, એ 20 by 20 નું એક ટેબલ જેવું હતું. I saw several flags of various countries floating. મેં જોયું કે કેટલાય દેશોના ઝંડાઓ ફરકી રહ્યા હતા, લહેરાવી રહ્યા હતા. Proudly
અભિમાનપૂર્વક I had lived this moment so many times in my mind. અહીંયા સુધી પહોંચવાની જે આ ક્ષણો છે એ મેં મારી જીવનમાં મારા મગજમાં કેટલી વાર જીવી હતી. That I did not have to be told that finally I had arrived. હું કહી શકતી નથી કે હું અંતે અહીંયા સુધી પહોંચી ગઈ. At 10:15 am on 21st May 2013, 21 મે 2013 ના રોજ સવારે 10:55 I was on the top of the world. હું દુનિયાના સૌથી ઊંચા ટોપ ઉપર હતી. કેવો અનુભવ કરો તમે? કેવું લાગે? કેટલા સપનાઓ જોયા હશે, કેટલી મહેનત કરી હશે આ ક્ષણ જીવવા માટે. એક એમ્પ્યુટી વિકલાંગ વ્યક્તિ જ્યારે આવી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે આપણે એમ થાય છે કેટલું અદ્ભુત સાહસ હતું. આવું સાહસ બહુ ઓછા લોકોમાં જોવા મળે છે. I felt like dancing. મને એમ અનુભવી રહી હતી કે હું નૃત્ય કરું. ક્રાઇંગ, હું અહીંયા રડી લઉં. એન્ડ લાફિંગ, અને હાસ્ય કરું, અટ્ટહાસ્ય કરું. સ્માઇલ અને લાફમાં એટલો ફરક. લાફ એટલે જોર જોરથી હસવું. એટ ધ સેમ ટાઈમ, આ સમયે માય માઇન્ડ વોઝ એ કેલિડોસ્કોપ ઓફ ઇમોશન. મારું મગજ હતું એ લાગણીઓથી ભરપૂર અલગ અલગ ભાત ભાતના ચિત્રો રજૂ કરતું હતું, ચિત્રોનું વિચારતું હતું. એવરીવન હેઝ એ રીઝન ટુ બી અલાઇવ. દરેક વ્યક્તિ માટે જીવવાનું કોઈ કારણ હોય છે. મે બી ધીસ વોઝ માઇન. કદાચ મારા માટે આ હતું. આઈ હેલ્ડ માય ફ્લેગ. મેં મારા ઝંડાને લહેરાવ્યો. એન્ડ રાઇઝ્ડ, અને ઊંચા હાથ કર્યા. બોથ માય હેન્ડ્સ, મારા હાથ હાઈ અપ ટુ રજિસ્ટર માય કન્ટ્રીઝ રેકોર્ડ. મારા જે દેશના રેકોર્ડનો રજિસ્ટર કરવા માટે મેં ઊંચા હાથ કર્યા. કેવી પ્રાઉડ મોમેન્ટ હશે. વેરી ગુડ, જબરદસ્ત અરુણિમા. વી આર પ્રાઉડ ઓફ યુ. વી આર પ્રાઉડ ઓફ યુ. વી આર પ્રાઉડ ઓફ યુ. आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ. और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा. इसलिए जैसे मैं ऐसी हालात में होने के बाद भी मैं आज यहाँ हूँ. Oh my God, look who's here. Yes, good.